In the conversation that you're going to see, Adarsh and I talked about technology. We also talked about technology in relation to Heidegger and Stephen Wolfram and his idea of computational irreducibility. We then talked about photographs, and I think Adarsh meant to talk about the kind of ontology they have. At least that is the rough idea I have as a remnant in my head right now. Then I talked about facial beauty and its analysis as it is done scientifically by YouTube channels. I came across this video and I brought it up in the conversation and we discussed that. At the very end, we talked about science as an impossibility, science as something that posits an impossibility for itself to resolve. In some sense, it would be an antinomous pursuit which science takes up. And so that is pretty much the conversation. I hope you enjoy. आज तुम्हारा क्या आई थिंक तुम दिन भर काफ़ी बिजी थे एग्जाम्स थे मेरे आज 3 दिन से किस किस चीज़ का एग्ज़ाम था आज तो टाइम पास था इंग्लिश था और आईओटी था टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरे हो चुके थे कल परसों फिजिक्स मैथ्स वगैरह आईओटी क्या था आईओटी क्या हुआ तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो बेसिकली उसमें पैराग्राफ वगैरह लिखने होते हैं टाइम पास होता है समझा नहीं थोड़ा सा इस पे और एलाबरेट करो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तरीके से फिलोसफिकल टर्म्स में कहें तो ह्यूमन थिंग इंटैंगलमेंट के बारे में बात करता है बेसिकली कि जो तुम्हारा इंटरनेट है तुम्हारे सराउंडिंग डिवाइसेस में कैसे पेनेट्रेट और कैसे एक शेप फॉर्म करेगा अपना ठीक है एक मोबाइल की फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट किया तो फिर वो तुम्हारे वॉचेस में घुस रहा है फिर तुम्हारे वियरेबल्स साइबर फिजिकल सिस्टम्स में जाएगा तुम किस तरीके से पहन रहे हो चीज़ों को मे बी फिर धीरे धीरे तुम्हारे कॉग्निटिव लेयर्स में भी जाएगा तो वो डीपर लेवल का इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा बट उतना वो लोग इमेजिन तो नहीं करते तो हाँ जैसे तुम मान लो देख रहे हो एक होता है ना ग्लासेस तो अगर एक ग्लासेस हैं जिसमें तुम्हारा कोई पार्टिकुलर टाइप का विजन कंप्यूटर से मॉडरेट हो रहा है मॉडरेट नहीं कहेंगे मतलब मैनिपुलेट कर सकते हो तो वो भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है सो बेसिकली इंटरनेट का 5G 5G विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4G या हाउ 4G वाज डिफरेंट फ्रॉम 3G और 2G तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को भेजता था वो भी शायद लेटर बनता फर्स्ट वाले ऑडियो सिग्नल्स को भेजता था वो सिंगल सेंसरी था फिर लेटर ऑन वो टेक्सचुअल पे गया टेक्सचुअल से डायनेमिक बना तुम एक स्क्रीन के अंदर पूरा दुनिया देख सकते हो फोटो वगैरह आने लगे फिर वो एक और डीपर लेवल पे चला गया एप्लीकेशंस तुम खोलने लगे तो वो एक और डायनेमिक लेयर ऐड होता अब इससे ज्यादा एक इम्बॉडीड एक्सपीरियंस में वो घुस जाएगा जो वर्ल्ड पॉइंट एक तरीके से जहाँ वो जा रहा था कि वो तुम्हारे सराउंडिंग्स पे आ जाएगा मेटावर्स अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक्सपेंशन का तो तुम इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ विजुअली नहीं पूरे तुम्हारे पांचों सेंसेस स्टार्ट होंगे इन्वॉल्व होना सो IoT इज अबाउट दैट आई गेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर तुम्हारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते होंगे कोई एक एग्जांपल दो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ना मुझे आंसर्स याद है ना क्वेश्चंस याद है ऐसे जोक्स अपार्ट एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा ना कि शुरू में तो वो बेसिक 11-12 का पूछते हैं और बाद में तुम्हारे बहुत ज्यादा ही बेसिक होता है कि मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ तुम जब सुनोगे तो बोलोगे हाँ व्हाट इज सेंसरी सिस्टम अब तुम सेंसरी सिस्टम से समझ रहे हो कि वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इनपुट कैसे ले रहा है और तुम ये भी जान रहे हो कि क्यों वो क्वेश्चन आईओटी में पूछा उसको अपने टेक्निकल टर्म्स में वो बोल देगा सेंसरी स्टिमुलाई के बदले वो पावर वर्ड को यूज करता है और फिर उसके बेसिस पे वो क्लाउड स्टोरेज वगैरह को ज्यादा मतलब अभी के सिलेबस में वो था कि पहले क्या था जब तुम्हारे इनिशियल आया था क्लाउड स्टोरेज वगैरह नहीं था ठीक है
तुम्हारा मोस्ट ऑफ डेटा तुम्हारे नियर बाय डिवाइस में होता था। अब क्या होता है कि तुम्हारा भी मोस्ट ऑफ द डेटा तुम्हारे लैपटॉप में नहीं ऑपरेट हो रहा है। जैसे हम्म। अभी तुम 13 से 15 GB जो वॉइस वाला है वो कहीं डिस्कॉर्ड के सर्वर में हो रहा होगा। हमारे जो इंटरेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं वो भी किसी सर्वर पे बहुत मैनिपुलेटिव टर्म्स में हो रहे होंगे। तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक टाइप का वर्चुअलाइजेशन हो गया। वर्चुअलाइजेशन भी एक टर्म है, बट वो डेली उसका तो नहीं है, दम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो हाँ, तो एक तरीके से वर्चुअलाइजेशन हो गया है। मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट एक्टिंग बीइंग एक्टेड अपॉन इन योर फिजिकल सराउंडिंग। इंस्टीड वो क्लाउड के कहीं और सर्वर में जा रहा होगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन स्पेशल नोशन। अगर तुम हाइडेगेरियन में जाओगे तो थिंग्स वुड चेंज। ठीक है, अभी तो इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तुमने ये जो एक चीज़ बोली कि पहले हम लोग जैसे फर्स्ट जनरेशन था उसमें सिर्फ ऑडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते थे, यही बोला ना तुमने। उसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस, फिर आई थिंक, आई डोंट नो उसके बाद क्या आएगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वीडियोस और ये सब, है ना। अब एक तुम्हारे चीज़ सराउंड एक चीज़ जो इसमें काफ़ी fascinating लगती है, और ये तुम किसी भी realm of human knowledge में देखोगे, the kind of evolution it goes through, it is not only hard to predict, लेकिन अगर तुम retrospectively देखो भी कि अच्छा ठीक है, पहले पहला लेवल ये था नॉलेज का, उसके बाद भी केम हेयर, उसके बाद भी केम हेयर, उसके बाद भी केम हेयर, every level prior to the one at which we are at looks so useless. Now this is of course different with the sciences. हम लोग अभी भी न्यूटन की थ्योरी ऑल दो गलत है तो मोस्टली लोगों से बोलोगे तो बोलेंगे कि नहीं गलत नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट राइट. They have this weird double standard. Instead of calling it wrong, which it is, they say it is almost right. Well then, you know what, 2 plus 2 is equals to 5 is also almost right. Give me marks for that. है कि नहीं. But the point being कि in most of these scenarios, all of these theories, say तुम्हारा classical mechanics before quantum mechanics came in, looks so naive and useless. Precisely just like that, तुम देखोगे the first generation आफ्टर। of telephones. क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है, वो mistake। क्या मिस्टेक था? तुमने बिफोर बोला नाइव, क्लासिकल मैकेनिक्स लुक नाइव आफ्टर द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा अच्छा ठीक है. After we encountered the quantum realm, it seemed very naive and almost pointless unless used in a specific context. बिल्कुल वैसे ही तुम अगर देखोगे, तुम ज़रा प्रेजेंट करना एक पिक्चर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फोन्स, सर्च करो, प्रेजेंट करो. अब जैसे इफ़ यू लुक एट इट, द फर्स्ट phone to the very left looks so outdated. I mean, it's not even like, just a, for example, at some point of time, maybe if you were using weapons made out of stone and wood, and you were using weapons made out of iron, तो तुम फिर भी बोलोगे कि हाँ ठीक है, चलो, you know what, let's use the former फॉर सम पर्पस. जैसे जब तुम्हारे घरों में चाकू आते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के चाकू आ रहा है. अब अगर वो एकदम जो कलिनरी वाली शेफ वाली नाइफ तुम्हें मिल भी जाए प्याज काटने के लिए, यू विल स्टिल से यू नो व्हाट, कीप दैट ब्लंट नाइफ और समथिंग एल्स, कुछ और कर लेंगे उसका. इट विल स्टिल हैव सम यूज. बट the first phone on the left looks so obsolete, and the thing to think about is that people really had no idea that there was this potential on the very right waiting in the very technology on what was in the left. You see, it's like when you look at it retrospectively, they had no idea what went on in the very first stage of evolution of a particular technology. Then there is something even more interesting, okay, which is you'll see a certain epistemic disconnect, which is a sort of ignorance, a sort of not knowing about what was before at every step in this evolution of technology. तो कई बार जैसे जब मैं टेंथ टेंथ तक मैंने कंप्यूटर्स लेके पढ़ा है, तो टेंथ में जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते थे, जावा,
सबसे जो बेसिक आई थिंक वट एवर जावा प्लस प्लस मे बी आई थिंक उसमें यूल हैव ऑल ऑफ दीज कमांड्स void main public something something. हम्म, अब मेरा दिमाग हमेशा ऐसे काम करता था कि पर व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, राइट? बिकॉज इफ any statement is made in the sciences, it represents something else and it is always accessible, that something else. तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि H2O, what is H2O? You'll explain to me that H2O is a collection of atoms. If I ask you what are atoms, you'll explain to me what are atoms, right? And then perhaps you could somehow come to the realm of reality and point to objects which are made up of atoms and maybe explain it to me that way. Of course there are holes in that explanation as well अगर आप चाहो तो, लेकिन it is digestible, right? लेकिन when you look at computer programming, तो I'm guessing Java is made on what, some sort of an HTML something, right? Some base program. lower level language. Yes. So it is based on that. Now, perhaps someone who made Java would know that basic level of programming. But then the weird part is they wouldn't know this, they can't make this sort of a jump like in the game of chess, right? The knight makes a jump. This person is like a bishop. They cannot make a jump over a piece. They're like stuck with this basic level of programming language which they used to create Java, but they do not know what is baser than this base level of programming. What is baser than the base level of programming? Perhaps bit हम्म, codes. ठीक है, तुम्हारे जो बाइनरी कोड्स होते हैं जीरो वन बाइनरी के, पे चल रहा है. तो एसेंशियली लॉजिक गेट्स. ठीक है, देन हम्म, समवन वुड बी very handy and very efficient with logic gates, right? फिजिक्स पे आ जाएगा. Yes. There is at some point there would be something about technology which a physicist would know, but a person involved in और IT and technology wouldn't. And so there's this weird thing. For example, beach में what would be an example of a phone which is in the middle? Maybe Nokia 3310, right? या जो हम सबके पापा के पास हुआ करता था. Um, Now Nokia 3310 looks absolutely obsolete relative to say the most primitive version of the iPhone, but it looks so incredibly advanced in relation to say one of those phones which our grandfathers perhaps used at some point of time when they first acquired telephones and stuff. तो there's this sort of amnesia कि जो चीज़ आगे हो रही है एक स्टेप छोड़ के पीछे का आपको कुछ नहीं पता है. सो द पीपल, मान लो स्टीव जॉब्स के जो भी एम्प्लॉयज थे, दे न्यू हाउ टू मेक एन आईफोन, दे न्यू हाउ टू मेक नोकिया 3310, बट दे वर कंप्लीटली लॉस्ट ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हाट वाज बिफोर देम. सो इन अ सेंस इट्स लाइक तुम्हारा डार्क एज. इफ इन एनी वे दैट इंटरमीडियरी इज कट, ठीक है, नॉलेज का, you're back to start turant because you wouldn't know what how was whatever came before was working uh, upon, in a sense. So you'll straight back go to Plato and Aristotle, just say the Europeans went in the after the dark ages, and you'll ponder over laws of transitivity. Acha, theek hai, A is equals to B is equals to C, therefore A must be equals to C. My god, how mind blowing. And then you'll have to work it out फिर से. So it interests me how there's this kind of a break of knowing, a break of epistemology at every point any technology evolves. तो इस पे तुम्हें कुछ बोलना दिस है? ये पहला बात तो फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में मुझे ये हाइडेगर में ये बहुत दिखा था. इफ यू सी हाइडेगर, ही गोज बैक टू प्री सोक्रेटिक्स एंड उसका जो एक एसेंशियल आइडिया ऑफ बीइंग है, यू नो, इट कम्स फ्रॉम द प्री सोक्रेटिक्स आइडिया ऑफ थॉट बीइंग. और जो हाइडेगर अपना पूरा थेसिस लाता है, he would not be able to do that without going back to the origin of philosophy. He wanted to know कि तुम्हारे थॉट में प्रॉब्लम क्या था, या how the philosophy worked. So he told that we need to go back to the roots. Therefore, uh, after going back to the roots, he was able to catch that we actually didn't have the focus on being. मतलब हमने बीइंग को अभी सोचना शुरू भी नहीं किया था. तो आफ्टर ऑब्वियसली एक तरीके से पोस्ट हाइडेगेरियन फिलोसफी, एटलीस्ट कंटिनेंटल में, तो
एक अलग लेवल की एडवांसमेंट मानी जाती है। सो वो एडवांसमेंट आई कहाँ से? अगेन वो बीइंग पे फोकस करने की वजह से, टू द थिंग्स देमसेल्फ के एक बहुत मॉडिफाइड और बहुत डिफरेंट वर्जन्स, उससे रिड्यूस करना गलत होगा। बट एक सेकेंड, इसको सी, रिपीट करना थोड़ा. Try कहाँ repeating से? कहाँ? this very phrase. Heidegger and post Heidegger, and then you mentioned something. हाँ तो that the main idea, the main revolutionary idea of Heidegger was कि हमने being को अभी तक सोचा ही नहीं, हम beings के Hmm. बारे में सोच रहे Got हैं, it. ठीक है। हाँ, जो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तुम्हें गुमराह कर देती है, ठीक है, एसेंशियल नेचर से। तो ये एक एक्चुअल आइडिया कहाँ से आया? इट केम थ्रू द रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हाइडिगर। और उसकी एक रेट्रोस्पेक्टिव रेंज बहुत बड़ी थी। अगर बाकी फिलोसफर्स के मेन फोकस पे जाओ, वो डायरेक्ट प्री सोक्रेटिक्स तक गया। और उसकी बुक्स भी फेमस है ना, पैरामेनिडीज पे उसने बुक्स लिखी। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? दैट इफ यू सी हाइडेगर, तो उसके Mm-hmm. रेंज ऑफ फिलोसफिकल डिस्कशंस, they focus on pre-Socratics, they go to Plato and Aristotle, then they also focus European scholastics, जो 20th सेंचुरी में बहुत लोग इग्नोर करने वाले थे, इग्नोर करते भी है। लाइक वो तो शेड करते पार्ट हैं. है, डायरेक्ट आते हैं पोस्ट डेकार्टिन कांटिन फिलोसफी पे आते हैं, ठीक है, मॉडर्न रेनेसांस की फिलोसफी पे आते हैं। बट हाइडिगर वेंट टू दैट, एंड उसके अगेन बहुत अच्छे आइडियाज, एक जो नॉस्टिक सोर्सेज कहते हैं ना हाइडिगर के, वो इसके स्कॉलिस्टिक फिलोसफी में एट्रीब्यूट की जाती है। इन अ वे स्कॉलिस्टिक्स मुझे उतनी भी बकवास नहीं लगती। एक अदर फिलोसफर था, ही वाज अ साइको एनालिसिस्ट, अर्बन जियोग्राफिस्ट, एंड अगेन जितना भी क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म है उसको पढ़ता था। एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इन दैट कि उसकी ये जो एक होता है ना ऑकल्ट सोर्सेस। And this is a scholastic philosopher you're talking about, विच वन? psychoanalyst and urban geographer and all of this. Or this is कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। so he was a scholastic philosopher. ओ नो, हाइडिगर नहीं था, मैं दूसरा का एक हाँ, शॉर्ट वही वही एग्जांपल दूसरा दे रहा दूसरा. हूँ। हाँ That person is supposed to हाँ, be a scholastic. What do you या mean by Gnostic sources? Gnostic sources, like apart from the mainstream Christianity, there were other, like in India there was mainstream Hinduism, which was Vedic thought. Then there was Tantric thought, जो अच्छा. थोड़ा क्लासिकल रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं। दे आर सपोज टू बी मिस्टिक इन नेचर। लाइक तुम्हारे उत्तर प्रदेश में होते हैं ना, उजला उजला पूरा फेस उनका रहता है। They are supposed to be living on human flesh or something. I don't know the name of their Agori. term. Agori. हाँ, अघोरी। सो उनके भी नेचर्स इस टाइप के होते हैं जो क्लासिकल वे में सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। बट या दे आर वेरी गुड इन मिस्टिकल फिलोसफी। और So a मोस्ट ऑफ द, niche, so a niche version of Christianity is what Gnosticism would be. नो, इट वुड बी Maybe you should. स्कॉलिस्टिक फिलोसफी, अपोजिट ऑफ दैट। नॉस्टिसिज्म का एक ये रिस्पेक्ट था कि ये बहुत वेदांतिक काइंड ऑफ फील देता था, दैट द गॉड वाज नॉट एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अस। सो या, एंड इट प्रपोज सम सॉर्ट ऑफ इनलाइटनमेंट एज वेल। एंड अच्छा. वो सिन और रिपेंडेंस जो होता है मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी में, वो सब भी उतना नहीं फॉलो करता था। एंड इट फॉर द आइडिया ऑफ साल्वेशन वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन दिस फिलॉसफी। सो तुम देख रहे हो कि वो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी से तो उतना नहीं, और कहीं ना कहीं इट इज मोर फिलोसफिकल इन नेचर, by Mm-hmm. focusing on salvation and mystical insights as well as enlightenment. So, yeah, I guess that gives the proper information about Gnosticism. So this philosopher you mentioned, the scholastic philosopher who you say was a psychoanalyst. Psychoanalyst is a very recent term. Yeah, like, Not what's the basis? that, but he What's read. But wait. uh, I'm asking about the nature of his work that makes you call him a psychoanalyst of sorts. साइको एनालिस्ट, एक्चुअली मैंने उसके साइको एनालिसिस वाले पार्ट नहीं देखे। मीन्स आई रेड हिज डिस्क्रिप्शन, सो मैं उसका अच्छा. बायोग्राफिकली मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा. बट आई अच्छा. अच्छा. फाउंड हिम इंटरेस्टिंग इन अ वे दैट उसकी अर्बन जियोग्राफी बहुत रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज ही हिज बुक नो
his chapter of the book, walking in the streets is famous. And उसे ocular centrism से बहुत problem है. He says that our culture is very much dominated by visual orientation of looking at the things. ठीक है. तो होता क्या है कि एक रेनिसांस के टाइम में एक टर्म था, मैं भूल गया. जो पेंटिंग्स होती थी उस पर्सपेक्टिव से ड्रॉ होती थी. ठीक है. एक पार्टिकुलर आई, कार्टेशियन आई, पूरा दुनिया को देख रहा है, तो एक पर्सपेक्टिव के तरीके से रेनिसांस की पेंटिंग्स ड्रॉ होती थी. और उसके अगेंस्ट में दूसरे टाइप्स की पेंटिंग्स होती थी. तुम अगर एक ऐसे पेंटिंग्स देखे होगे जिसमें एक एक होता है ना, क्रिश्चियंस का पूरा भरा पड़ा होता है, बहुत हेल भी है, हेवन भी है, हेल में बहुत लोग हैं. तो उसमें क्या हो रहा है ना कि एक पर्सन पे तुम्हारा फोकस नहीं जाएगा, तुम्हारा मल्टीपल पर्सन पे फोकस जाएगा. ठीक है. तो वो एक टाइप की पेंटिंग होती है. और एक टाइप की ऐसी पेंटिंग होती है कि एक पिक्चर में एक जगह तुम्हारा फोकस मेन रहेगा. वहां पे लाइटिंग बढ़ा दी जाएगी, शेडोज अगल बगल में हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा. तो ये दो टाइप में तुम्हें एक चीज दिख रहा है कि क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो ओवरऑल सराउंडिंग्स में जो छोटे छोटे इवन नुआंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मॉडर्न कल्चर इससे मिस कर गया. ठीक है. उसे वो एक एग्जांपल देता है ऑफ वोयर. वोयर मतलब समझते हो ना, जो बस देख रहा है. हम्म. इवन तो उसके सेक्सुअलिटी में ज्यादा टर्म्स यूज होती है. हम्म. और उसका एक हाँ दूसरा हाँ. एग्जांपल तो नहीं आता, टर्म नहीं आता है, पर उससे तुम इम्बॉडीड पर्सन का एग्जांपल ले सकते हो जो स्ट्रीट्स में चल रहा हो. जैसे एक एग्जांपल है कि मैं छत से रोड को देख रहा हूँ. ठीक है. तो वो एक बहुत डिसइम्बॉडीड व्यू है. मतलब मैं रोड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रोड पे चल के नहीं बता रहा हूँ, रोड को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ. और दूसरा बंदा कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, रोड के भीड़ भाड़ के बीच में हूँ, एंड देन आई एम डिस्क्राइबिंग हाउ इट लुक्स टू बी इन द रोड. सो I'm sorry, I missed it. What was it about walking on a road? बेसिकली इसका एक एग्जांपल है कि मान लो तुम, वो एग्जांपल देता है मैनहट्टन के सबसे फर्स्ट सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हो और तुम पूरे सिटी के देख रहे हो. ठीक है. यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग रिलेटेड टू सिटी, बट इन अदर केस तुम मैनहट्टन की स्ट्रीट्स पे जा रहे हो, उसके नुआंसेस को देख रहे हो, उसके नए नए बिल्डिंग्स को, नए नए रास्तों को देख रहे हो. ठीक है. तो एक हम्म. सोर्ट ऑफ इम्बॉडीनेस का जो फ्लेवर होता है, जो नुआंसेस ऑफ स्ट्रीट्स को पकड़ पाता है, उस बंदे के डिस्क्रिप्शन में होंगे. बट वो जो सबसे ऊपर मैनहट्टन के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के फ्लोर पे से देख रहा होगा, वो उसको नहीं बता पाएगा. ठीक है. इवन तो तुम्हारा गूगल मैप क्या करता है कि तुम्हारे पॉइंट लाइक लोकेशंस को बता पाएगा, लेकिन हर पॉइंट में तुम्हारे अगल बगल चीजें कैसे अपीयर हो रही है, चीजें कैसे ओरिएंट हो रही है, इट वुड दिस पर्सपेक्टिव वुड नॉट अलाउ यू टू एक्सप्लेन द नुआंसेस. In fact, there is a very nice synthesization of this split, which is Google Street View. Why is Google Street View so starkly different? क्योंकि Google Street View is not just कि कोई आपको किसी खिड़की से या फिर कोई गॉड्स आए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोटो दिखा रहा है, आपको प्रिसाइसली वैसे पिक्चर दी जा रही है जैसे आपको फिनोमनोलॉजिकली एज इन द वे यू वुड एक्सपीरियंस थिंग्स बिल्कुल वैसी आपको नजर आएंगी. सो इफ देर इज सम स्ट्रीट कॉर्नर पे कोई एक बोर्ड या फिर कोई एक स्ट्रक्चर, यू कैन लिटरली सी फ्रॉम देयर, ओके ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर आई हैव टू गो हेयर, और दिस थिंग इज सिचुएटेड इन ऑपोजिशन टू दिस. तो लेटर लाइक तुम इसके अपोजिट में बोल रहे थे, या मतलब तुमने एक किसकी? एग्जांपल दिया ना, जैसे तुम्हारा जो क्लासिकल गूगल मैप होता है वो उतना डिस्क्रिप्शंस नहीं देता था, पर अभी जो हाँ इवन हाँ, एडवांस मैं करेगा वो और इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा. तो मैं हाँ, तुमको तो उतना गूगल लिसन. गूगल मैप्स मैंने खुद मतलब स्ट्रीट व्यू तो पर्सनली यूज़ किया नहीं, क्योंकि अच्छा. in India you hardly find any useful snapshots of a street on street view. लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, आई थिंक दे बोथ आर इंटीग्रेटेड, राइट? कि आपके पास गूगल मैप्स भी है या फिर गूगल अर्थ, वॉट एवर इट इज, मे बी ऑन गूगल अर्थ हाँ दिस इज द केस. हाँ हाँ हाँ. गूगल अर्थ भी है जहाँ पे देर इज दिस what you pointed out in paintings was a कार्टीसियन व्यू, सॉर्ट ऑफ गॉड्स आई व्यू, जहाँ पे आपको कई चीज़ें एक साथ दिख रही हैं. एंड देन देयर इज दिस इमर्स्ड व्यू, राइट, जहाँ पे बैकग्राउंड आपका ब्लर है और लाइटिंग एक पर्टिकुलर तरीके से है, एम्बियंस एक पर्टिकुलर तरीके से स्टैब्लिश की गई है. सो इन गूगल स्ट्रीट व्यू विच इज इंटीग्रेटेड विद गूगल अर्थ, व्हाट हैपेंस इज आपको वो
पहला वाला व्यू भी दिखा दे रहा है कि हाँ रिलेशंस क्या है स्ट्रीट्स के बीच में, एंड देन हाउ यू वुड स्टैंड इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्ट्रीट एज इन यू एज अ सब्जेक्ट, यू फिनोमिनोलॉजिकली हाउ यू वुड एक्सपीरियंस अ सर्टन क्रॉसिंग, कि एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा. So it was not an opposition, rather an example of how it is synthesized. Hmm. Do you have something to say to this? Like for this example. नहीं नहीं, एनीथिंग, बिकॉज आई हैव अ सेगवे. जो चीज़ Okay. तुमने भी मेंशन की उससे परहैप्स वी Hmm. कैन कम टू द मेन वन ऑफ द मेन टॉपिक्स. तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे साइड में ठीक है मैं कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस हो तो अभी सर्व कर दो. अच्छा मतलब अगर मैं पूरा सिंथेसाइज कर सकता हूँ क्योंकि हाइडेगर का मेन कंटेक्स्ट था तो इट वुड बी बेटर टू कंप्लीट दैट थिंग एंड हम्म. सिंथेसाइज. So yeah, the main interesting part which I like Certi for, because see मैंने embodiment के बहुत thinkers पढ़े हैं, so to say that we should focus on embodiment is not actually catchy. So the catchy part is later on. The way he goes on to describe things in a very literary sense is very damn stylish. मतलब उसके पूरे टर्मिनोलॉजी या उसके वोकैबुलरी बहुत क्या कहते हैं 11th 12th 13th सेंचुरी की स्कॉलिस्टिक वोकैबुलरी है, वो किसी थिंकर में नहीं मिलेगी, उसने उसको पी लिया. एंड थ्रू दैट वो जो चेन ऑफ सिग्निफायर शायद बना रहा है, मैं सेमोटिक्स नहीं पढ़ा हूं तो बस यूज कर रहा हूँ स्पिरिट लेके. तो इट इज होता है ना वो हाइडिगर में मैंने क्या बोला था कि तुम्हें उसके फेनोलॉजिकल मेथड जाननी है तो उसके सिलोल क्या उसको बोलते हैं छोड़ो, उसके टर्म्स को सिलो अपनाना होगा और उसके थ्रू. सिलोजिज्म डू यू मीन? नहीं नहीं नहीं, वो तो सिलोजिज्म, लॉजिक होता है. वही वही. नहीं नहीं, नियोलॉजिज्म सॉरी. हाँ अच्छा, नियोलॉजिज्म नियोलॉजिस. इसको कहते हैं, वो जो टर्म स्टाइलिश बनाता है. ठीक है. तो हम्म. सिमिलरली सर्टिव जो लैंग्वेज क्रिएट करता है ना, वो it allows you to again you know uh, it is a tool to describe things in a very embodied manner. वो वोयर के बदले वाकर का एग्जाम्पल होता है. और लाइक हम्म. अगर उसके कुछ एग्जांपल्स लेने हैं तो ये हो सकता है कि वो यूज करता है ओरेटरी को. ठीक है ना, उसका उसका मेन फंडा ये रहता है कि जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है, तो ये एक बोलना भी एक टाइप का स्पेशल क्रिएशन हो गया जिसमें तुम्हारे पास जो वर्ड्स हैं पुराने वाले एक तरीके से एक बैकग्राउंड देते हैं. अगर तुम्हारे वर्ड्स नहीं छीन लिए जाएंगे तो तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, लाइक सोचना पड़ेगा. तो बट एट साइमल्टेनियसली द टाइम यू आर सेइंग, जो तुम्हारे वर्ड्स तो पुराने पर तुम कॉन्स्टेंटली एक नया एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हो, द वे ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स. ठीक है. तो जब जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, whenever I'm enunciating, so there are prefix things like grammar, the syntax, the words of it, but simultaneously in this exact, simultaneously even कोई difference नहीं है temporal. There is creative, creation of virtual in deluge terms, कि एक नया फ्लेवर आ रहा है तभी मैं जो बोल रहा हूँ वो अनसर्टन होने वाला, तुमको नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा. इवन द वर्ड्स वुड बी वेरी सेम, इवन दिस सेंटेंसेस या फ्रेजेस भी सेम होंगे, बट देर इज दिस क्रिएटिव साइड. सो वो वॉकिंग को बना देता कि इट इज ऑल्सो ओरल थिंग. ही टेक्स द मेटाफर इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, कि चलना भी एक ओरेटरी की तरह है जिसमें तुम्हारे जो सिटी की लेआउट है बस एक तुम्हारे प्रीफिक्स ग्रामर और वर्ड्स की तरह है, बट दे आर नॉट कंप्लीट थिंग्स. देर इज अ क्रिएटिव एस्पेक्ट जो पूरा अननोन है और वो उसको अनसर्टन और क्रिएटिव बना रहा है. मीन्स जब तुम चल रहे हो एक तरीके से तुम क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक थिंकिंग, मैं पूरी दुनिया ऑफ लिटरेचर को क्रिएट कर रहा हूँ अपने शब्दों से. इन सिमिलर वे when you are walking you are creating things, you are creating a new spatial dynamism. or the way he goes on to describe through this anchoring point is amazing. शायद तुम भी इन फील ले रहे हो. हाँ हाँ हाँ, मतलब कैसे. आई कैन परहैप्स I can perhaps describe this from another point of view, which is तुम्हारा स्टीवन वुल्फ्राम, नाम सुने? वुल्फ्राम अल्फा, जो लड़के वुल्फ्राम, मैथ्स के लिए हाँ यूज हाँ. करते हैं, वुल्फ्राम अल्फा. सो ही इज द वो क्रिएटर ऑफ वुल्फ्राम. He is the creator of अच्छा अच्छा. Wolfram Alpha. He's a physicist. He also happens to be a good businessman. Um,
Stephen Wolfram has this idea of reality being comprised of essentially two aspects. One is which is computationally reducible, the other is which is computationally irreducible. So there are certain things, say a game of chess, which is computationally reducible. We can figure out every move, which move should I make in order to win, and all of that. But very simple things, for example, the very working of this phone, it is computationally irreducible. Or the way my hair must have moved the moment I brushed through it, it's computationally irreducible. And he says essentially, so the point is, things which are computationally irreducible cannot be simulated by a computer. Everything else can be simulated by a computer. The problem with this whole scenario is then essentially any given situation in the world is not computationally, or it is not something that can be simulated computationally, because for that specific event to occur, try to understand this, you'll need to have the events surrounding it, because that is what is giving context to the event itself. And then that is what is, and then that is also being provided with some context by the by further events out far. समझ रहे हो हम्म, कि अगर मैं इस बॉटल को उठा रहा हूँ, तो इट्स नॉट जस्ट दैट मैं इस बॉटल को उठा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो डिस्प्लेसिंग सम एयर. By displacing the air, perhaps I'm applying some sort of a pressure on that door back there, किसी सेंस में, एक छोटे सेंस में. तो Wolfram takes this in an abstract way कि okay ठीक है, perhaps I can simulate picking up this bottle, but what I cannot simulate is reality. So reality as a whole cannot be simulated because it is computationally irreducible in some sense. Now the point is this: when we say, oh, we take Laplace's demon, which says, what if this demon were to know every particle's velocity and momentum and all the details, which is not possible, by the way, but if it were possible, this demon would be able to predict every move that we make, all of our lives, this whole universe, everything. So therefore there would be no free will. That would prove that there is no free will, and this demon is hypothetically possible, right? uh, so it is essentially in reply to this demon. Perhaps the best way for the demon to know what is going to happen is for the for him to let the thing happen in the first place, you see. So the best way to simulate reality is to just let reality happen. That's the whole point. हम्म, और आई सपोज तुम भी उसी चीज पे आ रहे हो. it very subtly differs from the idea of qualia versus theoretical frameworks that we use. एक तरफ हम लोग कहते हैं ना कि we can simulate everything, मान लो, लेकिन फिर भी we cannot get that experiential feel. But I suppose the difference here is कि तुम भी यही कहना चाह रहे हो कि Heidegger might say कि you can stipulate कि there is some experiential character. बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग stipulate कर सकते हैं कि this can be a particular word he can use. अगर तुम कहते हो he is, तो he is के बाद में at least less than infinity I can think of certain words which you can use वहां पे, because जैसे he is goes, this cannot be a word which can be used at this point in this syntactical arrangement, in this grammatical formation. He is goes, that is not possible. I can use he is gone. So essentially it is less than infinity. Okay. um I'm losing my train of thoughts. अच्छा तुम being नहीं being नहीं Acha, ha. So even though I can think of these permutations and combinations of all the words, the very best way to know what the word would be to just let the word shape itself, to just let the word come out of your mouth. There was this podcast जहाँ पे मैंने सुना था कि um, perhaps the best carrier, और ये बहुत ही एक फिजिकलिस्ट पैराडाइम से आता है ये आइडिया, पर perhaps the best way for consciousness to exist is precisely in biological machines, is precisely in biological organisms. So you get the feel of this justificatory process of things happening. बिल्कुल वैसे जैसे it's almost like there, for that experience to take place, I think
मैं समझता नहीं हूँ what is this idea of the virtual, but perhaps this might be it. कि even in things which are repeated, there is something new. There is some factor which cannot be just eliminated to previous events or previous occurrences. Would that be right? कि मैं That would तो, be similar. तो जैसे कि अगर मैं एक बार इस फोन को छोड़ के गिरा दूं और फिर मैं दूसरी बार भी छोड़ के गिरा दूं और ये फोन एकदम एग्जैक्ट तरीके से गिरे, अ साइंटिस्ट माइट से कि यू नो व्हाट बोथ द इवेंट्स आर सिमिलर, बट इन फैक्ट दे आर नॉट. एंड दिस देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट बाय रसल. Russell says causality is not true, right? Causality is not cannot be cannot be a thing because if I'm dropping this phone once, okay, if I'm dropping this phone once, that's event A. Now I say I'm dropping this phone again, that's event B, and event A and event B are similar. But the truth of this matter is when event A happened, वहां पीछे the air, it must have been in a certain composition. ठीक है. Now compare event A और event B के background events. Immediate background. Yes. अब अगर तुम कमरे को देखोगे, कमरे को पूरे तुम विजुअलाइज करो, जब मैंने एक बार ये फोन को गिराया, दूसरी बार फोन को गिराया, नाउ वी सी नो सिमिलैरिटी बिकॉज ऑन दी होल इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, है कि नहीं? फिर तुम पूरे घर को ले लो मेरे, मान लो कि घर के अंदर हर एक चीज सेम तरीके से होती है दोनों बार, लेकिन अगर तुम पूरे कमरे के अंदर आई मीन पर अगर तुम पूरे घर को ले लोगे, सो यू विल हैव टू अकाउंट फॉर डिफरेंट चेंजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस. फिर तुम बोलोगे कि ठीक है, घर में हर एक चीज एग्जैक्टली रिपीट होती है. नाउ यू आई थिंक यू माइट बी गेटिंग इट वेयर दिस इज गोइंग. अगर घर में भी हर एक चीज एग्जैक्टली रिपीट हो, पर फिर तुम पूरे शहर को ले लो, दैट वोंट बी द सेम. फिर तुम पूरे दुनिया को ले लो, अर्थ को ले लो, then you take the solar system. So ultimately, when you look at the universe as a whole, the universe only unfolds once, right? Was zero from the point inflation started, cosmic inflation, I mean, till the point the universe is going to die in some sense. It will only happen once, right? So we cannot say that this whole causal nexus in any sense is repeating itself. That's the idea that Russell gives. And so, in a sense, every time or maybe I'm just repeating myself at this point, but perhaps I'll make myself more clear as well. Every time anything happens, even when we're walking through a street, there is something new, non-reducible thing that is taking place. अगर तुम इसमें कुछ adjustments करना चाहो तो कर सकते हो. I would add one thing that शायद ये अच्छा context देगा, to the today's topic of mine, the critique of transcendental phenomenology कहीं ना कहीं इस लाइन पे आता है. इसको एक एग्जांपल से देख सकते हो कि जब तुम एक फोटोग्राफ लेते हो. No, short, एक short metaphor. No, I would explain a short example. I think you should. I think you should get into that if this acts as a segue. You can discuss that. Sure. तो एक फोटोग्राफ है कोई पार्टिकुलर इवेंट की, ठीक है. सो ऑब्वियसली इट इज डिस्क्राइबिंग दैट इवेंट. मतलब तुम ये थोड़ी कहोगे कि वो फोटोग्राफ से तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है. तो ऑब्वियसली बट one thing that photograph is missing is the depth of that event. कि वो जो इवेंट हुआ था, it was not a temporally flat thing. और फोटोग्राफ में तुम्हें एक how it happened, you are not able to get that. इसका एक और एक अच्छा एग्जांपल ये होता है कि there was quote that I do not see things move, I see things moving. So इस लाइन में तुम emphasis समझे क्या emphasize करना चाह रहा है? When Actually, I'm repeating no. once. Again, I'm repeating. I don't see things move. I see things moving. I don't get the difference. Yeah, so तुम अगर move का मतलब समझो, like क्या होता है move का मतलब एक grammatical context पे कि ये एक event हुआ यहाँ से यहाँ, उतना डिटेल में नहीं, वो reduce कर रहा है चीजों को, ठीक है. यहाँ से यहाँ गए, तो move का आंसर क्या, कहीं ना कहीं एक right wrong वाला आंसर है, बहुत if else वाला आंसर है. या तो move किया या तो नहीं किया. But when I'm saying that it is moving, इसका एक essential semantic structure, it's connected to experience. That to say that something is moving, I have to experience that, ठीक है ना.
तो जो मूविंग जो कंटिन्यूअस वर्ब है शायद वैसा ही कुछ होता था, ठीक है, आईएनजी जो present, लग present, जाता है। हाँ, present. तो So हाँ essentially प्रेजेंट। anything, hmm, anything that is used तुम्हारे present tense में, that's tied to experience, because present has to be in that you know paradigm of duration we are experiencing it. Yes. सो एक कोट मैं बुक का ही शेयर करूंगा, ठीक है। Hmm. अगेन द एग्जांपल फोटोग्राफ, दैट इन द स्टिल फोटोग्राफ, ठीक Try है। try try sharing the screen as well. ओके ओके ओके। All right, let me read. In this still photograph, time and space are abstractions. Although the image has a, but then again, I mean, the very existence of a photograph. But chalo, theek hai. बट This is the problem सी I इफ see यू in these. This is very much like the problem I encounter with my own critique of Searle's argument, because फिर होता क्या है कि you can reflect it upon itself, and then it's like, well, the photograph, you're asking me to look at it in a very abstract way. So it's not just that time and space are abstractions, the very view you're taking of the photograph is also an abstraction in itself, so it becomes an obstacle to itself which cannot be resolved in any real sense. But I'll just take it in the way it is meant to be. ठीक है? In the still photograph, time and space are abstractions. Although the image has a presence, it neither partakes of nor describes the present. Indeed, आई गेस the photo. अच्छा, पढ़ लो, तो एक और मुझे एक और पढ़ लो। indeed the photograph's fascination is that it is a figure of transcendental time made available against the ground of a lived and finite temporality. सो यहाँ पे जब एक लाइन कहा था दैट ऑल्दो द इमेज हैज प्रेजेंस, ठीक है। सो ये इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं ना कहीं एक मोस्ट ऑफ द पीपल जो धोखा खा जाते हैं कि डिस्क्राइब तो कर रहा है चीजों को ऑब्वियसली, कहना कि वो डिस्क्राइब या प्रेजेंस को भी आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, इट वुड बी रॉन्ग, यू नो एनीथिंग। आई एम सेइंग दैट whenever you try to repeat something, जैसे तुमने एग्जांपल दिया कि कोई एक इवेंट हुआ, उसको तुम कॉपी पेस्ट करना चाहते हो नेक्स्ट इवेंट, ठीक है। तो अगर तुम डिस्क्राइब करना चाहोगे ना तो वही है वो, उसको प्रेजेंट को कहीं ना कहीं एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है, बट इट इज नॉट पार्टेकिंग दैट ओरिजिनल प्रेजेंस। ये समझे कि जो I ओरिजिनल understand. प्रेजेंस के इमीडिएसी में पार्टिसिपेशन था, दैट वाज लॉस्ट। I think I understand, but perhaps we need to find a way to make it more accessible and understandable for anyone who might be listening. ये कैसे कर सकते, कोई एग्जांपल सोचो मे बी. Just कोई for एग्जाम example, I do have an example which is not directly related to this. Last year मैंने एक presentation की थी वो perception पे. So my essential idea was reducing 3D, worldly objects into their shadows. ठीक है? So we typically think, all right, if say there is a shadow of my hand on this wall, so of course the shadow is a representation of my hand. है कि नहीं? But really, in physical terms, the shadow is only caused by my hand. In the same way that the movement of this chair is caused by me. And so, in some sense, समझना इस चीज को. If I'm saying the shadow can be a representation of what I am, I can say anything can be a representation of what I am if it is connected to me causally. तो अगर ये chair हिली, and if you know everything about, information about the universe, you can deduce what I would be doing in that moment. So if you know everything about my surroundings, essentially the idea is you can fill the void that I am. But my idea was that in a real sense, the shadow, which is just a flat thing, just a flat outline, it in no way indicates that it really is my hand. So for example, if there is some sort of a shadow which is like, this, a wiggle, okay, it could very well be um, वो जो हाइड्रोलिक मशीन आती है ना दबाने वाली, it could be a hydraulic press outlined like this, and you would never know, you would never find so in the same way, if Plato's cave
the most convenient example. All of those passing cutouts, when they're passed in front of the fire and the image is cast, the shadow is cast, I'm sorry, the shadow is no more it is not distinguishable from a real object. Of course अगर तुमने real object देखा हो तो, but because the prisoners cannot see the haven't seen real objects, they just think, oh, everything must be 2D. अब हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है कि द प्रिजनर्स वुड बी विजुअलाइजिंग, मान लो अगर एक डक का कटआउट है तो दे वुड बी विजुअलाइजिंग डक्स एज 2D, बट देर इज नो रियल वे ऑफ विजुअलाइजिंग डक्स एज 2D, isn't it? वो जो शैडो है, इट इज कंप्लीटली इन सम सेंस डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल डक. The only reason why we can think of the shadow in terms of the duck is because we already know of the duck. तो तुम ऐसे इमेजिन करो, फॉर अस टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफ एंड द एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट. मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं विच मेक यू लुक ट्वाइस, कि एक पत्नी है, उसका सिर ऐसे निकला हुआ है, पति उसका सिर पकड़ा हुआ है, तुम पता ही नहीं पा रहे हो कि पति की टांगे कौन सी है, पत्नी की टांगे कौन सी है. यू नो दैट ऑफन हैपेंस. So in some sense you needed to be in that present moment to really figure that out, because the photograph as it is completely eludes that. It eludes that because it is also eluding space and time. You do not know the timing of it, you do not know the spatial coordinates of it, and so therefore you're completely excluded. Now that you were not in that present, okay, not yes, not in that present, you would never know if that thing coming out of the amalgamation of the husband and the wife's body is the husband's leg or the wife's leg. Only he who was in the moment would know. I think this would be a nice way to really point out the contrast between just the photograph being having a presence and being in the present. सो एक एक अच्छा आर्गुमेंट जो उन्हें लगता है, यू नो, द मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के कैटेगरीज से जो आते हैं, that the reason you can, you know, reduce any particular thing to any other thing, you know, in every manner, like they have a habit of reducing. तुमने एक इंसान का एग्जांपल दिया था, यूट्यूबर जो न्यूरो साइंस के टर्म्स में सब चीज को रिड्यूस कर देता है, ठीक है? तो उन्हें एक रीजन ये लगता है ना, क्योंकि मैं रिड्यूस कर पा रहा हूँ तो रिड्यूसिबल है चीजें, ठीक है, क्योंकि मैं दुनिया को एटम्स और कॉक्स में रिड्यूस कर पा रहा हूँ, एक पैटर्न दिख रहा है, यू नो, द टाइम दे फाइंड पैटर्न, ओ या नाइस, मैं जानता था ये रिड्यूस हो सकते हैं, रिड्यूस हो रहे हैं तो ये इनके बाप है, दैट्स इट. सो यहाँ पे उसका एक क्रिटिक मिलता है कि मान लो मैं कोई तरीके से हैंड को ओरिएंट करता हूँ, देयर विल ऑलवेज बी अ शैडो एंड दैट ओरिएंटेशन, कि उस शैडो से तुम पूरा इंफॉर्मेशन मेरे हैंड्स का निकाल सकते हो, मेरे हैंड के 3D डायमेंशंस को तुम शायद उसके 2D ट्रिगोनोमेट्री से निकाल दो, ठीक है, आई टेक इट. बट लेट्स से मेरे हाथ के अगल बगल दोनों जगह कंस्ट्रेंट्स रख दिए गए, ठीक है, कैसे भी इनविजिबल है क्योंकि कलर का इफेक्ट शैडो पे ना पड़े, पर मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है. बट देयर वुड बी नो रीजन इन दैट वॉल टू से कि मेरे हाथ नहीं मूव करे, क्योंकि मेरे हाथ के कंस्ट्रेंट सॉलिड है, उनका विजुअल से कोई रिलेशन है नहीं है, ठीक है. तो विजुअली मेरा हाथ वैसा ही है जब कंस्ट्रेंट्स लगे हुए नहीं थे. यहां तक समझ में आया? तो शैडो के अकॉर्डिंग अगर कोई थिंक करता है तो हाथ अभी भी मूव करने चाहिए, बट नहीं मूव कर पा रहे. सो एक ब्रेक देख पा रहे हो कि जो सेकेंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो शैडो है, वो इंफॉर्मेशन लेने में तो बहुत माहिर है, वो हर तरीके का इंफॉर्मेशन ले लेगा अलग मीडियम पे, बट उसकी ओरिजिनल इमीडिएसी में किस तरीके से मेरा हाथ ओरिएंट करे, क्या कैपेबिलिटी है, वो कभी उसे नहीं बता सकता. तो उसके फ्यूचर अनसर्टेनिटी को go on, finish it. तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यू नो, एंड देयर द एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस लाइज. I think I think I can refine your refinement of my original example now, which is, have you seen that एक मिनट, perhaps अच्छा perhaps you तो can नेटवर्क, एक मिनट, नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है. yes, maybe you should share your screen again. First search on YouTube bi-directional dancing doll. पहले से सर्च कर लो, सर्च करो YouTube पे बाई डायरेक्शनल. तो अब देखो,
This is an example where you can essentially think of it as a shadow, a very clever shadow. It gives the illusion that it is three dimensional, but really it is only a shadow. Hmm? Now the trick is you can imagine the ballerina dancing both the ways, Hmm. isn't it? If you really try to focus, you can think of her as rotating Hmm. clockwise and then anti-clockwise. Try to focus on her shadow. तो एक तरीके से this is Plato coming back from his grave. That's the copy of the copy right there. Now, if you focus on that and try to move it clockwise or anti-clockwise, whichever way you wish to, see the ballerina dance, you'll then notice that the ballerina also changes the way she's rotating. And so, essentially, if there were to be a computational way of trying to figure out what an actual ballerina जो भी ये कर रही होगी, अब इसे बंद कर दो, just close the stream. Hmm. So, if we try to figure out from a completely computational point of view what the ballerina would be actually in the real world, we'll get two solutions, almost like a quadratic solution. X is equals to 2, but it is also minus 2. Can be both. And that is a refinement of the example that you gave earlier, which is from the shadow itself, you cannot derive total information. You might have something completely different going on in the real world as compared to what you would infer out of a shadow, which is the case here with the ballerina. So, can you articulate it more? I want to get the relations between both the things. तो तुमने ओरिजिनल एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिया था कि अगर तुम्हारा हाथ कंस्ट्रेंट्स के बीच में देर इज नो रीजन फॉर directly from the shadow to think that the hand cannot move, Hmm. right? But in reality, your hand cannot move because it is constrained. And so your point was that you cannot get on an inferential basis everything about a three-dimensional object from the shadow itself, which was again my original point, which is you can only have this. It's almost, and I'm sorry, people won't get the context, but it's almost like this Cartesian error of viewing something by being displaced in the first place, and so you get this binary of subject and object. And so it is almost like the very reason we think we can figure out real world objects from the shadows because we have real world objects in the first place. So my point in summary was trying to agree with what I think you said, which was you cannot extract everything, or to be more bold and radical, you can even extract the stark opposite of what really is in the three-dimensional world, inferring from its two-dimensional projection. And my formulation was that it's almost akin to something of a retroactive effect, which is we can make sense of 2D projections as 3D objects precisely because we have 3D objects. Try to imagine, this is again a good example. We're just extending this more and more. Maybe we should not, but try to think of an organism living in a two-dimensional world. If you slide your hand through its world, it will only see plane projections of this hand. It will be like एक ऐसे circular concentric concentric नहीं लेकिन circular structures, 5 circular structures flat एकदम appear हो रहे हैं, शेप में बड़े हो रहे हैं, फिर यू नो डिजॉल्व होके एक बड़ा सा सर्कल बन जा रहा है, सर्कल भी नहीं, दिस सॉर्ट ऑफ एन अनइवन surface, and it disappears. They won't be able to make out what a hand is because hands are objects that exist in three-dimensional worlds, right? And this is all to just re-emphasize the same point. Now, if you have something to add to it, you may. अभी तो मेरे पास ऐसे एग्जांपल में नहीं और जो Mhm. कंटेक्स्ट है अदरवाइज ये क्या नाम था इस लड़की का जो भी The dancing ballerina optical illusion. so the dancing girl she can be used in even more context
क्योंकि शी इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ परसेप्चुअल इल्यूजन, इल्यूजन तो कहना नहीं चाहिए, बट या मैं Mhm. उसे अभी ब्रैकेट करूंगा, दैट कैन गो टू अदर प्लेसेस, सो आई डोंट हैव एज ऑफ। And the text, the reference that you shared, do you have something else that you wished to discuss? या बट लेट्स कंटिन्यू नाउ। As of now, we should continue, right? तो मैं अपना फिर टॉपिक उठाऊं। हम्म तो what do you think will be better if I give you the context now of the video, or maybe we should play the video once again and then give you the context? What do you think will work better? नो गिव इट इन द करंट सिचुएशन। Hmm. तो let me state what I'll try to do after I make you watch the video, right? Is about the analysis of an actor's face. And they're going to give an account of the actor's facial beauty. Hmm? And then I'll remark upon the way their analysis is done, and in general the kind of attitude that science takes in explaining things, and the kind of further claims that they make, or the kind of intuitions they develop on the basis of that, and what they might be missing out on. And there is something which is waving us all the way back from the time you were discussing being in a street and something, emerging out as the virtual, which is there is something. So for example, yes, when you were talking about reductive explanations, and you said there is something always that is left out, and perhaps I wish to elucidate, precisely point at what is left out. So you might want to play that video now. So this is the video, right? What makes the actor, which people might already know, Timothy Timothy Chalamet, attractive, analyzing celebrity faces. This is from which channel? एक बार channel का नाम दिखाना. फ्रॉम This कोविस is स्टूडियो। from Covis Studio. ठीक है? Yes. Full screen करके तो play कर दो. American actor Timothy Chalamet. He's always been a fan favorite, but personally, I don't really see the appeal. In some photos, he looks like a washed up drug dealer, and in others, he is Hollywood's latest heartthrob. From certain angles, there are visible asymmetries, and in others, he looks like a Greek statue. The best way to describe him is polarizing. Unlike a professional model who's chosen because they look good in every angle and style, Timothy is neither here nor there with his appearance. His face is a lot like Cillian Murphy's. It's masculine but with a lot of feminine features. Although many people on the internet consider this to be one of Timothy's worst looks, I think it's great at highlighting his aesthetic. Let's start with the jaw. Again, it's a bit much. His bigonial width is so large that the jaw inclines outwards from the chin, giving him a very boxy, masculine appearance. This is the type of jaw that's only achievable by very large implants for the average person. Try The pausing it type here. that your surgeon would make you. So this is pretty much the part of the video that we really need to say in order to, you know, create some context for what I'll be saying next. I, by the way, found this video almost a year ago. उस टाइम मेरे दिमाग में ना strike नहीं किया था, but try imagining an actor such as him. Now, तुम personally, would you say that he's a handsome man? या To a great extent, he's a handsome man. But the thing is, the kind of handsomeness that people typically imagine him to be embodying is not the same handsomeness as we would declare from a picture of him or from a facial analysis of him. Now I think you can close the stream ताकि ये screen से हट जाए. तो think of someone like Shah Rukh Khan. ठीक है?
Now that's a borderline case, but also take someone like Tumhare. I've seen Instagram pay. There are a lot of reels of these actors in their youth, and of course, youth is youth. They are very good looking, but then again, the point still remains, which is what makes the attractiveness of a certain actor different from the attractiveness of a model you see when you walk by a hair salon or a beauty makeup model. What is makes it different? When you walk by the hair salon and you have this guy flaunting his fades, very sharp eyes, very sharp jaw, very sharp jawline, all of that. Hmm? You still don't have that sense of, oh, this is an attractive person, this thing which can be the center of my attention for a while. You don't, right? On the other hand, you have people going absolutely, and they used to be, they still are, over Shah Rukh Khan. Now, Shah Rukh Khan, I saw this interview of Juhi Chawla. I don't think we should waste any time showing that interview because, first of all, she was very inarticulate. Secondly, it doesn't make any sense. But she was like, when I first came to meet Shah Rukh, I was like, oh, he's going to be the hero, this brown boy who is so thin and everything. Hmm? Juhi Chawla technically was not wrong. Shah Rukh Khan is this small guy who is sort of skinny and has a big nose, as he described himself in an interview. I saw this interview of him where he said, I'm just an Indian actor with a big nose. And I'm supposed to be the king of romance in India, something like that. So, how come a man like Shah Rukh Khan is so appealing to people, but a pretty face on the banner of a hair salon is not? That's the question. Hmm? Interesting. Now, I would like to go back to something that you said about reductive methods of explaining in something that it leaves out. This thing you mentioned that it leaves out something. Think of the way we perceive art. Again, I would like to tie this back to the way you describe a certain art to be drawn from a perspective, whereas a certain art to be perspective-less, aperspectival, right? Typically, we are not cognizant of these factors which are shaping up our perspective, right? Oh well, the colors are so pretty. The uh, scenery is so pretty. And you can think of it in that abstract way. But what is really making it more than just pretty, what is making us phenomenologically engaged in the painting, जो तुम उस दिन डिस्कस कर रहे थे सॉर्ट ऑफ एक सूरज है जो तुम अपने खिड़की के अंदर से देख रहे हो, खिड़की के बाहर से, आई मीन, मतलब ऑफ कोर्स अंदर से तुम बाहर की तरफ देख रहे हो, दैट इज हाउ यू meant to put it. और तुम एक सनसेट देख रहे हो एक बीच पे, तुमको एकदम ऐसे दिख रहा है. There's a different approach. Shapes you it shapes you differently towards the object of art, which is the sun. याद है? Yeah. So there are very subtle ways in which we are pulled towards any piece of aesthetics. There's a very specific orientation. The same scene, if we talk about movies, the same scene, cinematographically speaking, can be gloomy, but at the same time, it can also be horrific, like an element of horror. So the line between horror and something that is sad, for example, a scenery of a jungle closing up, it can differ based on the music. It can differ, the kind of cinematic layer soundtracks add to movies. It's very subtle and it has to be subtle. So for example, किसी comedy movie के scene में, especially Bollywood में होता है, whenever there's a joke,
track ends में होता है, laugh track, and people get annoyed by it because that which is mediating or carrying your somatic gaze, it has to be subtle. There's this principle: Hmm. show, don't tell. Why are we not supposed to tell? Because if we tell where the gaze has to go, it won't go that way. It's like a kid. I know I'm perhaps going too fast, but the way we're attracted toward elements in any film, talking about film specifically, it's like a kid. If I tell the kid not eat the chocolate, it is going to eat the chocolate. If I tell the kid eat the chocolate, I'm going to give you, I don't know, full marks for something, it won't eat the chocolate just to annoy me. It has that rebellious attitude. And so the gaze has to be made to be navigated very subconsciously, very in subtle ways, right? In the same way, when we think about attractiveness of people, what's the man on the saloon is supposed to do? It's supposed to attract your attention. It is explicit. Do you get now what I mean? The very fact that is supposed to be the attractive man capturing your attention is the very reason why it does not do the same. Do you have something to add here? No, like I agree. Right, मतलब एक, yeah. right. And Yes, go on. uh, I would say कि the time you were emphasizing on the gaze aspect, the time you say, order the gaze to look, to traverse this perspective, is the same time it escapes that. It is, मैं कहूँगा कि it is in the nature of the instantaneity, कि कोई भी instantaneous phenomenon वो अपने आप में ही ऐसा होता है that उसके dynamics में तुम कोई चीजें explicit नहीं कर सकते हो. Every dynamism of instantaneous phenomenon should be implicit, and otherwise it cannot be instantaneous first of all. And any kind of beauty or aesthetics or phenomenological uh, sensation, at that time need to be produced in that manner, in the manner of decenteredness. So One, yeah. I don't think Mhm. you can say phenomenological sensation because sensations are phenomenological. Phenomenological elements are not sensational. मतलब they are, but Phenomenological मतलब ये तुम ऐसा नहीं uh, कह सकते ना कि experience. वही तुम्हारा एक phenomenological Hmm. element तो Element, like it would I be very mean, deductive. but then again, I mean, if you're using jargon, तो फिर ठीक है, jargon ठीक. को cover करने के लिए भी और jargon ही use करना पड़ता है. अगर हम लोग if you use a jargon and then you use a very simplistic term, uh, one only looks like a fool. Although the person knows that they're using it for the sake of convenience, but there will be one person who's like, oh, philosophical sensation. That's stupid. But anyway, so this thing about the face on the banner, right? It does not grab your attention precisely because it needed to. It is, in another sense of the word, reduced to a piece of advertisement. But Shah Rukh Khan's face, say, as the king of romance, is not a symbol of advertising anything, other than itself. It's like this self-referring thing. It's Shah Rukh Khan's face is Shah Rukh Khan's face, a charming face. You know him to be very good with the ladies, and he throws these dirty lines around and all that. But the thing is, it's not just, and here's where the lines melt between what we think and what the thinked thing is, which is the face, the physical face, the outlines. And I'll try to put it a rather poetic way, not poetic, I'll try at least, but in this melting down of the symbolic structure of language, which is, it's like Shah Rukh Khan's face melts in his charm, it melts in the way he speaks. And in this amalgamation, we find the true beauty of Shah Rukh Khan, at least as perceived by some contingent of the population.
For example, my mother of used to say, at least some years back, that Sunny Deol is her favorite actor. Hmm? He's the one who she finds the most charming. Why? Why? Because he's the guy, at least in the movies, he's not messing around with a lot of girls. He's the loyal type of a hero who sticks with one woman, fights for his country or whatever cause it is, and then the movie ends. So we technically think, especially in the day and age of biological naturalism and evolutionary psychology, that we probably use looks as the basis for someone's personality. There's also a video on the same channel जो हमने अभी spot की थी while we were looking at the video earlier. This video, which was titled, I suppose, I guess, "Do Personalities Get Judged on the Basis of Looks" or something. And I suppose to some extent that might be true, but also is true the reversal of it, which is many a times, and in most of the cases, I would, this is the distinguishing factor between just good looking, handsome, and this charming man who has this face I would die for. Now, that we have established this difference, now try to think of the kind of analysis that guy was trying to make of that actor's face, Timothy Chalamet's face. He says there are some visible asymmetries. That's the point, I think. The visible asymmetries, as he calls it, which is supposed to be a big flaw in a model's face, is completely irrelevant to some 16-year-old girl named Anisha living in Bangalore, dying over Mr. Chalamet's movies. It is irrelevant. What is relevant is how he presents himself in interviews and how he in movies. There was this one friend of mine who I asked, why do you like this particular actor? I don't for liking this particular actor. If you should be as modern language and its evolution has resulted in the great magnificent word simp over every other man who's in the movies. And she was like, you, and then I tried to guess it. I was like, is it what the character emotionally represents for you that you're attracted to the actor as well? And she was like, precisely, that's the reason. And I think to a great extent that is true. It is in fact the very reversal. It is in the reversal of this idea that there are pretty faces and then there are personalities which we infer on the basis of I just said, the looks themselves, but the reverse art, which holds true in many cases. And the problem arises when you try to make one of the ways of analyzing this beauty, this thing called beauty, universal, as if that is what explains it. And what's done in this video is they have used bigonial width and bisogononial, whatever widths, chin height, whatever. They have used these things to analyze his beauty. They have missed what perhaps a naive art admirer would miss in a painting, where it would complement the subject of the painting and the way it has been painted, but he would completely gloss over the kind of ambience the painting creates, the kind of perspective the painting gives, the kind of phenomenological sucking in the painting does. In the same way, these analyses, where they're trying to get this scientific hold on aesthetics of the human body, they fail to account for the subtle ways in which we're sucked into people and their looks, the way they physically look. Now, here's something more bold, which might be wrong, but assuming that I'm never wrong, it must be correct. This failure of the application of a sort of a scientific method onto facial aesthetics does not reflect science's failure
this particular domain of doing analysis, I think it demonstrates its failure as a whole. And now I would like, if you could share that note I shared with you. Okay. So this is the note: disease of the genius, 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 disease of genius. All right. Now, the thing, although it will only make sense as a whole, but the thing to really note here is the part where it says, I think in the second paragraph, try reading the fourth line. इसको read करो, read it out loud. पूरा या fourth से. Second paragraph, fourth line. Beings capable of climbing steep mountains have misunderstood this act as they being able to become the mountain. And on top of that, they are not honest, because even if they become realize it, they would refuse to. They have That's it. romanticized the thing. That's it. Although the last line um, flirts with Yeah. this another greater theme, the main point is beings capable of climbing steep mountains have misunderstood this act as being able to become the mountain. I think you should stop streaming now. You, by the way, might get what this means because you mentioned the same thing at the very start, which was this very act of explanation does not make you the thing that is being explained. It only happens when you're explaining already explained things. For example, अगर तुम बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करो, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझाने के लिए तुमने ऑलरेडी assumptions बना रखे हैं, so of course you can explain that. It's like, relating one shadow to another, but you cannot relate a shadow to a three-dimensional object without having no context of what the three-dimensional object really is, which is the same thing. You can climb steep mountains, but it is a stark difference to say just because you have climbed Mount Everest, you have now become Mount Everest. Just because, and this is where I relate this part to that video and the analysis which is done in that video, just because you can scientifically, or at least in some sense, give a scientific picture, a scientific analysis of some actor's face and why they seem to be attractive, does not really make up for the kind of beauty that they really embody, because that beauty is precisely eluded in these explanations. It's like that is the very precise thing that is being eluded. You cannot have these subtle things like, what precise movie did the actor act in, because of which he was, he got a couple of fans is perhaps the inappropriate term to describe a few million, but perhaps it is because of that subtle thing that so many people find this person attractive. You'll see many of these actors, especially I think as you grow up, you get this knack of facial aesthetics. You know what a symmetric, nice, proportionate face is. Yet, really, if you think of the face you love the most, it might be the most disproportionate of all, or at least, you know, in a normal, usual case, wouldn't be even, say, 90% closer to the most proportionate face that is possible. Then there is one more thing. In some of these reels or shorts on YouTube, you'll find, have you seen that perfect face mask? They'll put this outline on your face, और फिर तुमको ऐसा लगेगा as if your face were to fit that mask, it would be perfect. Have you seen that? Try searching it up on YouTube. अभी हाँ अभी क्या perfect trying try type perfect trying perfect face on I think I saw Robert Pattinson's on this shot. So type on Robert Pattinson.
Right. This precise first. Mm-hmm. Played. तुम्हें एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे पॉज करना होगा, ठीक है? मैं बोलूंगा तो कर देना, हम्म, जब वो आउटकम दिखाएगा तब पॉज कर देना। हम्म, पॉज, 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 पॉज। हम्म। Do you think this version of Robert Pattinson, the new Batman, is perfect or more attractive than how Batman or Robert Pattinson really is? I'm pretty sure most of your female friends would agree that it is the original Robert Pattinson that they would all prefer to see, isn't it? So Yeah, this sure. claim, so this claim that science makes by its analysis that this is how the perfect face should be, they forget this idea, and it is a rather cheesy idea, but really that is the full dialectical definition of perfection, which is imperfection seeming to be absolute, imperfection seeming to be perfect. It is that little ridge on your brow, or a little spot on your face, or the pointy nose that a particular actor has. It is what makes their face particularly charming in the way that their face seems appealing to many people. And so I wrote just a short phrase, not even a phrase, just 4 words in my notes. जब मैं टहल रहा था मैंने लिखा था, because I had planned on discussing this, which is science constitutes an impossibility. And now you'll perhaps instantly get this idea, this connection to the Lacanian real, almost like this retrospectively, um, a retrospective creation of an obstacle to its own self. So science tries to get this rigor, precise picture of something that is unclear. Hmm? So it's sort of like you're trying to get a picture of muddy water, but the condition is first to be in that muddy water, and to also to be able to photograph it, you have to clear the water. But the moment you clear the water in order to get a picture, the mud disappears. Also, ye sharing iska band kar do. So it is an impossibility, isn't it? The very fact, the very fact that you're trying to get a picture of muddy water, being in muddy water, is an impossibility, because either you won't get the picture, and if you do get the picture, you get the picture of the clear water, not muddy. And so in that sense, by removing the very distortion, and this is in one of these videos, I don't think we have the time, maybe recording a time almost khatam hi hone wala hoga, but in one of these videos there's this, perhaps you can google it up on YouTube it, Slavoj Zizek on the real, शायद तुमने देखी होगी. There's this video where he's just I rambling guess about so. the Lacanian real for 5 minutes, and he says it's kind of an obstacle to its own self. It's that thing where if you remove the distortion, the distorted thing itself disappears, right? And so you have this mirror which is distorting your face, and you say, well, you know what? Try to get the mirror really cleaned up, and then I wish to. So, for example, तुम्हारे शक्ल पे सुबह सुबह there's this blur, right, on the mirror. And you're like, man, I look really cool. Let me click a picture. But then in order for you to click the picture, what you do is you wipe it off हाँ unknowingly. हाँ, ये बहुत हाँ, Hmm? You feel, oh, if only I wipe this off, then the picture that I'm going to click will be more clearer, crisper. My God, what a perfect picture it would be. But then when you pick up the phone and you pull it up, you realize, well, wait a minute. The very thing that I did right now was to remove this blurriness. And in
And in doing that, I removed that which was supposed to be clicked, which was the blurriness. And so I think that is the kind of project science takes on, not just in matters of aesthetics, where they of course fail because of the way the subtlety of aesthetic attraction works, the way some piece of art, some could say a face is a piece of art, pulls you, pulls your subjectivity. It not only fails in that, but it fails as a general discourse, something that has an authority to speak over things in this precise way, where they remove the distortions, but in the but meanwhile, in doing that, they lose the distorted thing itself. I think that's it for me. Uh, Interestingly, when you were saying about the distortion part, मेरे दिमाग में suddenly one thing came, one reference, and that was Lacan. I had been reading, and interestingly, तुमने later on कहा. So I have an example which may illustrate the thing more. So Lacan uses this Borromean rings example, और Oh उससे yes. मुझे लगता है रियल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो साइंस मिस करता है. वो जो तुम एग्जाम्पल दे रहे थे दैट द फेस को और परफेक्ट बनाने का. So I'll screen share the Borromean ring, for the reference, Mhm. so that people can see. So it Mhm. is this Borromean ring. और ये बोरोमियन रिंग एक्चुअली 3 सर्कल से बना हुआ है जो एक्चुअली ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करते हैं, मींस दे आर एक्चुअली सेपरेट. और बट व्हेन यू सी देम यू विल फील दैट यू नो दे आर इंटरलॉक. ठीक है. तो सोचोगे नहीं, तुम्हें लग रहा है, तुम देख रहे हो कि इंटरलॉक तो होगा, बट जब तुम बॉर्डर्स पे फोकस तो इट्स इम्पॉसिबल टू सी कि यहाँ तो कुछ नहीं है, ये रेड और ग्रीन पे, और यहाँ पे सिमिलरली Uh, ग्रीन और ब्लू का पेयर यहाँ देखो और यहाँ. सो अब आदर्श रुको, अच्छा एग्जांपल. तुम्हारी आवाज कट रही है. अच्छा, अब बोलो. अभी कट रही है, बहुत कट रही है क्या? नहीं नहीं, अब थोड़ा सा सही है. अच्छा, अभी अभी तो बोलने की कोशिश करो. ठीक है. अभी मैं रिपीट करता हूँ. आवाज अगर हम्म. कंटिन्यूसली आ रही है तो कह दो ठीक है, कि अभी आ आ रही रही है. है. अभी आ रही है, अभी आ हम्म, रही है. ठीक है. सो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है ना कि यहाँ पे तुम्हें कैसे परसेप्चुअली अपीयर हो रहा है. परसेप्चुअल अपीयरेंस में तुम ये क्लियर है कि इंटरलॉकिंग के बिना तो तुम इसे इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो. तुम जैसे देख रहे हो इंटरलॉकिंग एक नेसेसरी फेनोमेना हो रहा है. ठीक है. बट जैसे ही तुम इसके डिटेल्स पे एनालाइज करना चाह रहे हो, ठीक है, तुम्हारा इंटेलेक्ट एनालाइज करना चाह रहा है लैकानियन कंटेक्स्ट में द सिंबॉलिक, ये पैराडॉक्स निकल जा रहा. मतलब ये यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दैट. तो यहाँ पे लकान कहता है इट इज एग्जैक्ट दिस केस जहां द रियल अपीयर होता है. He later on goes to say that Freudian unconscious was mental, but Lacanian unconscious is not mental actually. It is the real itself. वो आगे ये एग्जैक्ट उसका कोटेशन था that the unconscious is the real itself, and unconscious एक तरीके से हर वक्त हमारे आई गेस इसे मैं बंद कर देता हूँ. हम्म. तो जो तुम्हारा अनकॉन्शियस है वो हर वक्त एक तरीके से एवरीडे लाइफ में प्रेजेंट है. बट ये जो तो तुम्हारा सिंबॉलिक का लेयर होता है, एंड दिस सिंबॉलिक इज योर मेंटल वर्ल्ड. इट इज नॉट दैट अनकॉन्शियस विच इज मेंटल. उसका अगेन दिस लेटर डेफिनेशन है. क्या कर रही हो तुम? क्यों तुमको मच्छर मारना है इस समय पे? हाँ चलो. तो
एक मेरा पुराना एक She आइडिया was था बट मैं she उसे was enchanted by the symbolic order of mosquitoes. She just had to indulge in it, completely betraying the real of her psyche, which was to just be in the corner, resisting the camerization of her self, body, whatever. Bolo. that real seems to be very authoritarian coming from a smaller brother, younger brother, I would say. Okay, Well, leave that when point. you're as smart as me, you can afford to be authoritative. Bolo. Hmm. Okay. So this relation between unconscious and real, as well as the symbolic and what was that? Mental, yeah. वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि तुम्हारे जो मेंटल फेनोमेना है, ठीक है, उसको सिंबॉलिक से कनेक्ट करना, इट काइंड ऑफ मेक सेंस। और जब तो वो बोरोमियन रिंग्स का एग्जांपल देखो, तो हो क्या रहा है, तुम जब चीजों को देख रहे हो, मतलब एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो वहां पे तुम अपने मेंटल स्ट्रक्चर को उतना इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हो। जैसे चीजें अपीयर हो रही है अनकॉन्शियस को, यू आर लेटिंग इट अपीयर, एट दैट टाइम द रियल इज देयर, बट द टाइम तुम उसके बॉर्डर्स को एनालाइज करते हो तो क्या होता है, देखते हो बॉर्डर्स तो इंटरलॉक कर ही नहीं रहे। दो दो छह होते हैं ना, तीन है। और उस वक्त क्या हो रहा है, तुम्हारा द symbolic या द मेंटल इज ट्राइंग टू इंटरफेयर विथ इट्स इंटेलेक्ट, एंड इट इज गेटिंग ओनली पैराडॉक्स। हर छह बॉर्डर्स पे इंटरलॉकिंग नहीं है, और तब पर भी जब तुम साथ में एज अ होल देखते हो, अनकॉन्शियस जिस तरीके से अपीयर अपने आप करता है, उस वक्त इंटरलॉकिंग दिखता है। सो व्हाट वाज being explicitly shown here, that कि यहाँ कि the time the symbolic starts interfering, unconscious या real कहीं ना कहीं collapse हो जाता है। और the same thing is there in beauty, that the I think. time Mhm. Bolo, bolo, bolo. हाँ, so the time जो साइंटिफिक ऑर्डर्स क्या कर रहा है कि अपने एक मेंटल वर्ल्ड या कहते हैं ना अपने सिंबॉलिक ऑर्डर्स को एक्सटेंड कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली वो रियल से ही दूर भाग रहा है, मतलब इन अ सेंस इट इज गेटिंग अवे फ्रॉम द रियल इन एनी केसेस। वो सिंबॉलिक के स्ट्रक्चर्स बना रहा है और रियल से दूर भागता जा रहा है। इन द सेम वे दैट व्हेन आई ट्राई टू यूज माय इंटेलेक्ट टू सी कि इंटरलॉकिंग कहाँ से है, मतलब मेरे लिए इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है कि उन बॉर्डर्स पे एक इंटरलॉकिंग का फिनोमेना होना चाहिए, ठीक है, एंड वहां पे नहीं दिख रहा। सो ये एग्जांपल्स आई वुड शो दैट साइंटिफिक पूरा पैराडाइम का एक पूरा क्रैक दिख जाता है, मतलब इफ यू एनालाइज दिस फिनोमेना देयर वुड बी, बोलो Would व्हाट you टू से। would you say would you say you could then summarize it as science constitutes a method which is to pursue an impossibility and to completely resolve it, which is science posits the resolution of an impossibility for itself. यही है science का project in some sense कि I am going to completely describe reality, but the way I'm going to do it through symbolization, जो मैंने पहले बोला था। और बाय द वे आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैंने अभी इतना पढ़ा नहीं कि मैं प्रॉपरली कैरेक्टराइज कर पाऊँ सिंबॉलिक को और द रियल को, बट एटलीस्ट आई कैन पुट फोर्थ द इलेबोरेशन एक समरी में, थोड़े छोटे फॉर्म में, by means of purely differentiating the two, which is one definition of the real is that which resists symbolization. I think you missed that out, and I think that can be explained, that can be used to explain जो भी तुमने बोला, or at least give it a more refined look, which is the real is that which is eluded, which eludes symbolization. I don't want to reboot the again, now तुमने पढ़ा, what made me to avoid कि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि ना मेन साइंस लग सकता है, जो मैं पढ़ रहा था इंटरेस्टिंगली, कि this phenomena itself, bracketing the whole theoretical system for 1 second,
It is not the theoretical system, even the whole philosophic या psychoanalytic literature or the definition of the real or something, which actually can uh, debunk the facade of scientific dominance, या क्या universalism. It is the phenomena itself, because at that time जब तक मैं लिटरेचर में हूँ, ठीक है, ये अगेन एक बहुत जनरल लगेगा, बट इस केस में ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब तक मैं लिटरेचर में हूँ मैं रियल के एक बेस्ट फिनोमेना को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और जब तक तुम रियल से इनकाउंटर नहीं कराओगे तब तक साइंस का यूनिवर्सलिज्म डिमोलिश नहीं होगा. To demolish the universalism of the science, you need to encounter the people with the real as it is, and the real will itself show that how the scientific system is so vague. यहाँ पे तुम्हें पूरा दिख रहा है कि जब हर इंसान अपना इंटेलेक्ट को बॉर्डर्स पे फोकस कराएगा, उसे पता चल जाए कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ है. कोई भी ये डिबेट नहीं करेगा कि इंटरलॉकिंग हो रहा है. सो आई वुड से कि हमें we need to go into these examples in a very nuanced way, to go into more examples, to have a phenomenological encounter. यहाँ पे phenomenology एक स्कूल को रेफर नहीं कर रहा हूँ, with the kind of examples or the settings which Lacan uses, or Lacan's का whole psychoanalytic literature for the real uses, that would demolish it very destructively, I would say. ये एग्जांपल में मुझे एक होता है ना क्लिक, that every people के पास एक क्लिकिंग होगा. So I think हाँ, last line I'm re-emphasizing that again and again, what is going to uh, get a click in people's mind, click of foolishness or of their own thought or of any scientific methodology or any universalism, is the time they try to see where the interlocking is. It is at borders. They see that the time you see at the borders there is no interlocking, and it is like इसको स्टेप वाइज करते हैं. ये 6 एल्गोरिदम वो सोचेंगे, देखेंगे, जिसमें से एक दो प्रोसेस इस फोटो को देखना होगा, and in this whole process of the photo they will realize the foolishness. It is a kind of meditation instead of a theoretical system, maybe meditating on the Borromean cases of Lacanian real. So yeah, I or wanted to perhaps emphasize that. or perhaps even just meditating in general. If a scientist tells you, you know what, we're going to solve the problem of consciousness just like that, it's just a physical problem waiting to be solved, just ask him to meditate. That will be his encounter with the real, at least for that matter. Yeah, but the thing is that is very vague. Means वो अपने पास it, था, it but was it was supposed to be vague. Tumhara point was the real point. This is just me adding something to it for the sake of okay. adding something to it because I had it in my mind. Anyway, I think this should be enough. आई थिंक जिन जिन चीज़ों को हमें कवर करना था हमने कवर कर लिया है. तो आई स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया हाउ वी शुड एंड दिस, क्योंकि मुझको एक जो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है कि सिर्फ यहाँ पे हम ही दोनों लोग बैठे हुए हैं और कोई तीसरा इंसान नहीं है. If there is a third thing, then it is only the collective gaze watching over us. It's still very consciously there. So I think this should be it. I'll just end it here. ठीक है.